right here. एक तरफ है लिमा सुनिप इमचेन और दूसरी तरफ है बॉन जॉवी. क्या बोलते हो आप इस फाइट के बारे में? Mara Lima Sunep has come a long way. He fought at IMA Nationals along with MFN contenders last year, and he won his spot at Matrix Fight Night 11. And today he opens the card against Bon Jovi. Bon Jovi, we've seen him fighting at Matrix Fight Night. However, this is Lima Sunep's debut, a pro debut at MFN 11. I'm excited about the fight because I know that Bon Jovi brings in excellent kickboxing. On the other hand, we've got Lima Sunep who comes in from DC in Nagaland and can actually show us some fireworks here. Ladies and gentlemen, make some noise for Lima Sunep Imchen! We've got the Naga Zombie, Lima Sunep Imchen, making his way to the cage. Well, Naga Zombie walking on to the cage. Guys, I'm not sure if you could imagine, but a bunch of Nagaland zombies running around, we would all be in trouble. बहुत खतरनाक फाइटर हैं लिमा सुनिप इमचेन. हमने इनका जलवा ऑलरेडी देखा है हैदराबाद में जब इन्होंने आईमा नेशनल्स में फाइट किया था और वहां से उन्होंने रास्ता बनाया अपने लिए एमएफएन में आने का. For sure, for sure. Over to Jared. And his opponent, making his way to the cage, Nong Maitem Bon Jovi! बॉन जॉवी बढ़ रहे हैं केज की तरफ. पूरे 3 राउंड अच्छे से लेके गए थे इस फाइट को. गैस टैंक बहुत अच्छा है केज में ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए. Ladies and gentlemen, first we introduce the blue corner. He weighed in at 54.6 kilograms, representing Nagaland. Give it up for Lima Sunep Imchen! And his opponent, fighting out of the red corner. He weighed in at 56.7 kilograms, representing Manipur. Make some noise for Nong Matem Bon Jovi! Ladies and gentlemen, as the action begins, the referee for the fight, Ranjit. Follow my instruction all the time. If I say stop, stop the fight. If you want to touch gloves, back to your corners. एमएफएन 11 की पहली फाइट शुरू होने जा रही है. मैं बहुत एक्साइटेड हूं. नजरें गड़ी हुई हैं पूरी दुनिया की इस समय एमएफएन 11 के केज पे. Ladies and gentlemen, welcome back once again. This is Matrix Fight Night 11. We are live exclusively in the country on Disney Hotstar. This is the first fight of the evening. We've got Lima Sunep Imchen, the Naga Zombie in the blue corner, taking on Bon Jovi, the rock star, in the red corner. Man, straight 1-2 shots by Bon Jovi. बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन टिकाते हुए वहां पे बॉन जॉवी. You guys are noticing here how patient Bon Jovi is just sitting back and picking these shots right here. शायद जल्दी खत्म हो जाए. लेग लॉक की कोशिश वहां पे लिमा सुनिप की तरफ से. The Naga Zombie has Bon Jovi's toe here, and this could be an advantage to the Naga Zombie. However, Bon Jovi is trying to get rid of that submission attempt there. Guys, that's pretty deep right here. Transitioning right here, looking for the heel hook. ये हील हुक एक अच्छा मौका ढूंढा लिमा सुनिप ने, वरना उससे पहले स्ट्राइकिंग में काफी हावी पड़ रहे थे बॉन जॉवी. और अगर ये हील उन्हें ना मिलती तो बॉन जॉवी अपनी स्ट्राइकिंग कंटिन्यू करते और शायद फाइट भी खत्म हो सकती थी वहां पे. Well, Bon Jovi actually landed some dynamite hands there, and he's trying to get out of that submission hold. We can hear Naga Zombie's corner asking to go for a knee bar. If he pulls a knee bar, this is going to be the first knee bar ever pulled up at Matrix Fight Night.
फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं बॉन जोवी डिफेंड करने का. Bon Jovi doing a really good job putting pressure on him here. और अब पूरी तरीके से मुझे लगता है खतरे से खाली होने ही वाले थे कि वापस लिमासोनिप ने उस पैर को जकड़ लिया. But the Naga zombie here is relentless. He's got in his toe and he's not letting it go. Yeah, he is certainly being persistent here with this. Looking for a nice knee bar. Bon Jovi doing a really good job of avoiding it, grabbing his own foot and pulling it towards his body. Look for him to posture up and stay in that half guard position here. बॉन जोवी को यहाँ अपने पैर को और टांग को बचा के अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी होगी और उसके बाद वो हावी पड़ सकते हैं लिमासोनिप पे. Well, it looks Limassonep has a really tight grip on the toe, and Bon Jovi trying to get himself out, throwing in those shots. बहुत ही कड़क मुक्के राहुल, वहां पे बहुत जान है इन मुक्कों में. इससे असर जरूर पड़ेगा लिमासोनिप पे. I have to say I'm very impressed with his persistence. और अब यहाँ पे बॉन जोवी ऊपर आ चुके हैं. वो यही करना चाहते थे शुरुआत से, एक भी मिनट नहीं छोड़ रहे हैं. ऊपर आते ही सीधा मुक्कों की बारिश. Man, those shots are devastating. Huge shots. Looking for a guillotine here. Bon Jovi looking और ये yes, फाइट yeah. होती है खत्म. Bon क्या बात Jovi है. submits Limassonep Imchen via guillotine. John, this is the first ever submission that I think Bon Jovi has pulled off. You know, he's a kickboxer. He's been striking really hard and he's got devastating shot strikes, but this is the first time I see him pulling a submission here. I can tell you in talking to him pre-fight, I said, have you been working on anything? And he said, I have been working to improve my grappling. And that's what we saw it here. Look at those initial 1-2 big shots by Bon Jovi. And then more shots coming in. शुरुआत से ही हावी पड़ रहे थे बॉन जोवी लिमासोनिप पे. यहाँ थोड़ा सा पलटता हुआ नजर आया जब लिमासोनिप ने लेग लॉक का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डिफेंड किया बॉन जोवी ने और अंत में कस के मुक्के लगाए, हार्ड शॉट्स लगाए और एक गियोटिन के साथ फिनिश किया. राहुल, क्या कमाल की शुरुआत हुई है MFN 11 की. बॉन जोवी जैसे मन बना के आए थे कि स्टार्टिंग से ही हावी पड़ना है लिमासोनिप पे और खतरनाक तरीके से अटैक करना है. ये देखिए यहाँ पे हुई थी शुरुआत. 3 minutes and 10 seconds of the first round, declaring the winner, guilty. From the red corner, Nagmaker Bon Jovi. All right, so the first fight of Matrix Fight Night 11 is in the history books. We've got the winner right there on the screen. Bon Jovi, the rock star. He submitted Naga Zombie in the first round itself by a standing guillotine. बहुत ही मजेदार फाइट थी ये राहुल. क्या कड़क तरीके से बॉन जोवी ने अटैक किया. बढ़िया लेग किक्स मारी, बॉडी किक्स मारी, पंचेस टिकाए सीधा जबड़े पे और एंड में एक खूबसूरत और इजी गियोटिन के साथ फाइट को फिनिश किया. Hello. Thanks for my friend Fast, and thanks for the management team of my management team, and thanks coach, thanks for the Soma coach, all the coaches. And then lastly, I love my daughter. Only 4 days, then I go to direct to Soma. Then my wife, everything sacrificed to me. I'm a poor guy, but my wife and my mom, everything sacrificed to me. My last fight is it's not good because my last fight is I'm not training.
because my MFN 7, I win the MFN 7. Again, I win. I fight the MFN 9. There's no time. I'm celebrating too much. This time, not again. I'm not celebrating. I will training, continue, and then I'll bell as soon as possible. 1 year after I will take bell. Thank you.